Good afternoon, everyone. Myself, Arvinder Shah, and I am going to take your first lecture of 12th biology, that is reproduction in lower and higher plants. First of all, we are going to understand what is the meaning of this title, reproduction in lower and higher plants. So, basically, you know what is lower plant and what is higher plant. According to the two kingdom system of classification, which you are already studying in the 11th standard, the organisms are classified into two kingdoms, that is kingdom Plantae and kingdom Animalia. Under kingdom Plantae, we have the five division of plant, that is division Algae, Bryophyte, Pteridophyte, Gymnosperm, and Angiosperm. So till Pteridophyte, all the division of the plant category come under lower plant, and after that gymnosperm and angiosperm so come under the higher plant because they have well developed root, stem, flower, fruit, everything. Okay. So in the lower group of organisms, we are going to discuss in this lecture how the reproduction is take place in the lower group of organisms because in the lower group of organisms there is no flower. We know that flower is the reproductive part of the plant, but in the lower group of organisms, didn't saw any time the flower is there. In the case of algae, bryophyta, there is no flower. Okay, so we are going to discuss about the reproduction in lower and higher plants. So see the first introduction part. So first definition, reproduction is an essential process lead to the continuation of species as well as to maintain the continuity of life. For continuation of any life on the earth, of any species, maybe plant, animal, bacteria, viruses, for the continuation of life of every living thing, one process is compulsory, and that process is called a reproduction. Okay, so reproduction is very important to continue the life of any organism present on the earth. Now, there are various methods of reproduction. So we are going to study what are the type of reproduction. Basically, we have the two method of reproduction, that is sexual reproduction and asexual reproduction. As you know, the sexual reproduction, there are two parents involved, and in asexual reproduction, only single parent are involved. So we are going to discuss description about a brief description about the sexual and asexual reproduction. Okay. So first one, asexual reproduction. What is asexual reproduction? Asexual reproduction does not involve fusion of two compatible gametes or sexes. Okay. Here it does not allow the fusion because uh, here there is no two partner. So here the fusion doesn't take place. Here gamete formation doesn't take place. Asexual reproduction में gamete नहीं बनते हैं, gamete नहीं बनते हैं, यहाँ पे two parents नहीं होते, तो इनका fusion नहीं होता है gamete का. Okay. It is a process resulting in the production of genetically identical progeny from a single organism and inherit the gene of the parent. That means यहाँ पे जो reproduction हुआ वो एक ही parent से हुआ. तो एक parent से कोई भी organism का reproduction होता है तो the progeny will be similar to their parent, एकदम same to same अपने parent की तरह ही दिखता है, identical. Okay. Such morphology are genetical identical individual are clone. तो पेरेंट्स की तरह दिखने वाला, सेम टू सेम पेरेंट्स की तरह दिखने वाले को हम क्लोन भी कह सकते हैं. ओके, तो मोस्ट ऑफ द केस इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने भी रिप्रोडक्शन होता है, that progeny or the offspring are very similar to their parent, and such type of individual which are genetically identical to their parent are called the clone. Doesn't no variation take place, वहाँ पे बिल्कुल variation होता ही नहीं. Now, in the asexual reproduction, there are the various organisms which choose the different mode of reproduce. Okay, so organisms choose to reproduce asexually by the different mode which are followed here. We are taking there are n number of asexual reproduction.
So we are only taken the three method over here, that is fragmentation, budding, and the spore formation. I will going to discuss one by one with picture what is fragmentation, what is budding, and what is spore formation. So mode of sexual reproduction. The first one is fragmentation. What happens in the fragmentation? Multicellular organism can break into the fragment due to the one and other reason. What is the meaning of one and other reason? So all the multicellular organisms which fall under the lower group of organisms at the time of maturity, the single body are divided into one or more fragments. Okay, and each fragment will continue as a will produce an individual. मतलब एक जितने fragment बनेंगे, all fragment act as a new individual. Okay, I will show the diagram also. The fragment grow into the new individual, that is Paragera. I'm taken here the example of Paragera to explain the fragmentation. Okay, so this is Paragera. You can see the nucleus present in the Paragera. Spirogera have a chloroplast, that is spiral chloroplast. Okay, you can better see in the diagram, and that is a septum formation. So Spirogera have a septum. Okay, so at the time of fragmentation, this septum will be broken down, and one Spirogera are divided into two parts. In this diagram, here it is seen that Spirogera are divided into two parts, but it doesn't mean कि Spirogera दो part में ही convert होते हैं. Depend upon the length of the Spirogera. अगर Spirogera का length काफी ज़्यादा है, उसके पास 10 to 15 अगर septum है, तो 10 to 15 septum divide होंगे और 10 to 15 नए Spirogera born होंगे. By the process is called the fragmentation. तो ये होता कब है, जब पायरोगेरा या फ्रेगमेंटेशन में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनका लाइफ साइकिल एंड होने वाला रहता है. द ऑर्गेनिज्म आर एट द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी. उसके बाद दे वांट टू कंटिन्यू द रेस, और कंटिन्यूटी के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा. तो क्या करता है, अपने बॉडी पार्ट को ऐसे डिफरेंट पार्ट में छोटे छोटे फ्रेगमेंट का मतलब क्या है, वो ब्रेक डाउन कर देगा, और जितना ब्रेक डाउन करता है उतने नए ऑर्गेनिज्म बॉर्न होते हैं ऑफ दैट कैटेगरी. ओके, now the next one is budding. Budding is the another method of asexual reproduction which are commonly seen in the east. Okay, as you know, all the fungus are multicellular organisms except one, that is yeast. So usually it takes place during favorable condition by producing one or more outgrowth, that is called the bud. So when the favorable condition take place, when the climatic condition is good, when the food is sufficient, favorable means what? When the yeast have all the required, when the yeast are satisfied with all the requirements, what they require for the reproduction. So that is known as a favorable condition. If the climatic condition is good, if the food is abundant, so automatically the yeast develop a small output on their body, and that is called a bud. And after the maturity, means if the bird started growing at their body, after some time it detects from the body of the uh, yeast, and each bird will grow as a new yeast. I will show in the diagram. See, here bird begin to form a parent cell. ओके, तो पैरल सेल से यू कैन सी कि छोटा सा एक आउटग्रोथ बाहर निकलना शुरू हो गया है. तो जैसे ईस्ट का मैचुरेशन होता है, तो ईस्ट एक छोटा सा एक्सटर्नल आउटग्रोथ अपने बॉडी में शुरू कर देता है. उसके बाद अभी एक से दो पार्ट में कन्वर्ट करना है, तो न्यूक्लियस का डिवीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस आपने सुना होगा. सबसे पहले यहाँ पे कार्योकाइनेसिस होता है. कार्योकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, कार्योकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. तो ईस्ट एक ईस्ट के दो ईस्ट या मल्टीपल ईस्ट बनाना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सबसे पहले उसको न्यूक्लियस को डिवाइड करो. तो सबसे पहला कार्योकाइनेसिस होता है, एंड दैट इज फॉलो बाय द साइटोकाइनेसिस. एक बार एक न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया,
उसके बाद क्या होता है कि the cytoplasm will divided into two parts and the two cells are different from each other और उसके बाद ये दो नए ऑर्गेनिज्म बॉर्न होता है. तो यू कैन सी योर हियर कि एक बर्ड डेवलप हुआ सबसे पहला एक्सटर्नल ग्रोथ जैसा फेयरवेल कंडीशन प्रोवाइड हुआ ईस्ट को, साथ में उसका मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने वाला है, बट मीन्स उसका लाइफ साइकिल खत्म होने वाला है. तो लाइफ साइकिल खत्म होने से पहले वो क्या करना चाहता है कि अपनी तरफ बहुत सारे ईस्ट प्रोड्यूस करना चाहता है. तो नेक्स्ट में हमने देखा कि न्यूक्लियस की कॉपी हुई, उसके बाद बर्ड बिकम सेपरेट एज अ डॉटर सेल और इस तरह से बर्डिंग प्रोड्यूस अ चेन ऑफ सेल. इस तरह से उसका रिप्रोडक्शन होते रहता है. एन नंबर ऑफ ईस्ट प्रोड्यूस होता है फ्रॉम वन ईस्ट सेल. ओके, that process is known as a budding. Now the spore formation. This is also one of the common methods in the reproduction of the lower organism. Now what is spore formation? अगर आपको पता होगा, आपने अगर फंगस देखा होगा, राइजोफ्लोरा के बारे में सुना होगा, मोस्टली ब्रेड के जो फंगस होते हैं या पाव पे उगने वाले जो फंगस है या पिक्सल्स पे उगने वाले जो फंगस है, दैट इज मोस्टली राइजोपस. अभी राइजोपस क्या होते हैं? राइजोपस का स्ट्रक्चर अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है. ऊपर कुछ बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, स्टॉक है और उसके रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे. तो उसका बॉडी पार्ट जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट. द बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पोरेंजिया. ओके, तो स्पोरेंजिया, माइसीलियम और हाइफे, these are the three parts. स्पोरेंजिया क्या है? स्पोरेंजिया इज नथिंग बट अ sac like स्ट्रक्चर. अभी इसमें क्या होता है कि दैट इज अ sac like स्ट्रक्चर. तो उसके अंदर होता है क्या है? तो दैट इज एन नंबर ऑफ स्पोर. तो एन नंबर ऑफ स्पोर स्पोरेंजिया के अंदर फिलअप होते हैं. अगेन टाइम फॉर द मैच्योरिटी. स्पोरेंजिया इज फर्स्ट वाइट इन कलर. जैसे जैसे मैच्योर होता है इट बिकम अ ब्राउन इन कलर. फिर सूख जाता है, वो ड्राई हो जाता है, देन इट विल बी ब्रेक डाउन एंड ऑल द स्पोर प्रेजेंट इन दी स्पोरेंजिया आर लिबरेट आउट. क्या होता है? उसका बर्स्ट होना और बर्स्ट होकर जितने भी स्पोर होते हैं सब लिबरेट होते हैं. लिबरेट होने के बाद सब जगह विद द हेल्प ऑफ विंड इधर उधर सब डिस्पर्स हुए रहते हैं एंड all the spores of the fungus are just waiting for the favorable condition. अगर उनका कंडीशन फेवरेबल है, ओके, so they start growing with the help of the spore. तो उसको spore formation method कहते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ spore formation. क्लाइमोडोमोनास और सेक्सुअली. क्लाइमोडोमोनास भी एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है. वो भी स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ही अपना रिप्रोडक्शन करता है. Asexual reproduction occurs motile juice spore. What is the meaning of motile? इसका जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके पास ना जूस स्पोर होते हैं. जूस स्पोर का मतलब होता है ऐसे स्पोर जो कि मूव कर सकते हैं. जूस समथिंग रिलेटेड टू एनिमल्स. एनिमल का मतलब व्हाट इज द डिफरेंस इन एनिमल और प्लांट? तो एनिमल कैन मूव, तो इसलिए इसमें जू, जू का मतलब खुद से मूव कर सकते हैं. तो इसका जो रिप्रोडक्शन होता है क्लाइमेडोमिनस का, वो भी एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और ये किसके थ्रू होता है? जू स्पोर के थ्रू होता है. ठीक है, वो जू स्पोर जब डिवाइड होते हैं तो ईच जू स्पोर आर इंडिपेंडेंटली टू ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. ओके, other method of reproduction are binding present in amoeba and paramecium, कोनिडिया फॉर्मेशन इन पेंसिलियम. तो और भी कुछ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि हमने इसमें डिस्कस नहीं किया. एक तो बाइनरी रीजन है. कॉमनली हमने अमीबा में देखा है कि अमीबा जो होता है एक बॉडी जो होता है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट. ओके, इन द केस ऑफ अमीबा, अमीबा में दो तरह के फ्यूजन होते हैं. एक तो बाइनरी फ्यूजन भी होता है, एक होता है मल्टीपल फ्यूजन जहाँ पे अमीबा एन नंबर ऑफ न्यू अमीबा फॉर्म करता है. बट दोनों में डिफरेंस क्या है? कब होता है बाइनरी फ्यूजन और कब होता है मल्टीपल फ्यूजन? when the when the favorable condition take place. अगर अमीबा का फेवरेबल कंडीशन है तो उस वक्त क्या होता है कि अमीबा मोस्टली बाइनरी फ्यूजन में ही प्रोड्यूस करेगा. और जब एक से दो पार्ट में डिवाइड होते हैं तो दैट टू इंडिविजुअल आर कैपेबल फॉर अलाइव, वो जिंदा रहते हैं. बट व्हेन द कंडीशन आर अनफेवरेबल, ये आपने ऑलरेडी स्टडी किया है कि अगर कंडीशन अनफेवरेबल होएगा तो सिस्ट का फॉर्मेशन होता है और अमीबा को पता नहीं कि कितने पार्ट में डिवाइड करना है. जस्ट दे आर गोज ऑन
मल्टीप्लाई एन नंबर ऑफ अमीबा फॉर्मेशन टेक प्लेस, बट उसमें कितना सर्वाइव करेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। ओके, एन नंबर 100 के ज़्यादा तो बनते हैं, बट कितने सर्वाइव करेंगे ये इसका कोई गारंटी नहीं होता। ठीक है, तो इन द केस ऑफ फेवरेबल कंडीशन the amoeba produced by the biological, and in the case of unfavorable condition, the reproduction in amoeba takes place with the help of multiple species. Paramotion में भी होता है, it is divided into two part. Now the conidia formation in penicillium. अभी हम लोग अपने पास rhizopus का example नहीं है, but I will show you how the conidia is like a spore, penicillium में mostly वो दिखाई देता है. This is the structure of conidia. You can see the conidia, it's a spore of penicillium. Okay, it have a stalk. This is known as a germinating conidia. Okay, now vegetative propagation. After asexual reproduction, the next step is known as the vegetative reproduction. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, इसमें भी कोई दो पेरेंट का इन्वॉल्व नहीं होता, यहाँ पे भी किसी तरह का फ्यूजन नहीं होता। बट डिफरेंट क्या है उसमें और इसमें, इसमें ये डिफरेंट है कि हियर द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। as you know what is the vegetative part of the plant, vegetative part of the plant क्या होते हैं, plant क्या होते हैं, that is root, स्टेम और लीफ, ये तीन चीज है जिसके थ्रू प्लांट अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। मतलब हम लोग लीफ से एक नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, रूट से एक नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, और ठीक है स्टेम से एक नए प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। दैट इज व्हाई ये डिफरेंस है, ऑल सेक्सुअल में ही आता है, बट इसको डिफरेंट कैटेगरी में इसीलिए कहा किया गया बिकॉज इसका वेजिटेटिव पार्ट से एक नया प्लांट बॉर्न होता है। तो प्लांट प्रोड्यूस asexually through three vegetative part, hence the plant are genetically identical to their parent। तो सेम कंडीशन है, asexual reproduction होगा तो जो न्यू इंडिविजुअल होंगे वो बिल्कुल आइडेंटिकल रहेंगे अपने पेरेंट्स से, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। Now there are few methods which would not occur naturally in plant। कुछ मेथड ऐसे हैं जो कि नेचुरली ऑकर नहीं होता है। So by knowing the fact, by knowing the technique, there are the people who start doing the artificial method of reproduction। Now, agriculture and horticulture exploit vegetative reproduction in order to multiply fresh stock of the plant। मैंने जैसा बताया कि कुछ एग्रीकल्चर और कुछ हॉर्टिकल्चर्स होते हैं जो प्रॉपरली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसको प्रॉपरली स्टडी करके वो अपना दिमाग यूज करते हैं, और देयर इज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन। आई विल शो यू द डायग्राम और पिक्चर ऑफ हाउ दे आर ग्रोइंग, हाउ दे आर डूइंग, बिकॉज हॉर्टिकल्चर में आपको मालूम है एक नेचुरल ग्रोथ ऑफ द प्लांट कैसे होता है। आजकल छोटे से प्लांट में फ्लावर एंड फ्रूट आना शुरू होता है, ये नेचुरली नहीं होता है। ये हमने कभी देखा नहीं कि छोटे प्लांट में फ्रूट और फ्लावर का डेवलपमेंट होना। ठीक है, और बॉन्साई के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सब जो है दिस ऑल आर आर्टिफिशियल, ये नेचुरल नहीं है। कुछ एग्रीकल्चरिस्ट और कुछ हॉर्टिकल्चर ने इसको प्रॉपरली स्टडी किया है उस हार्मोन के बारे में, तो प्लांट के बारे में, और स्टडी करने के बाद दिस इज क्रिएटिविटी वर्क विच आर डन बाय द एग्रीकल्चरिस्ट और हॉर्टिकल्चरिस्ट। Artificial methods are also used to propagate desired variety according to the human requirement। अब ऐसा हो गया है कि if I have a knowledge about the plant कि कैसा उसको combination करना है, तो I can do the different variety in same plant। अभी कैसा है कि अगर ह्यूमन का रिक्वायरमेंट होता है कि अगर एक ही प्लांट में अगर एक रोज का प्लांट है, अगर हमें उसमें रेड, येलो, वाइट, अगर पिंक, अगर एक सारे कॉम्बिनेशन एक ही प्लांट में आना शुरू हो गए तो कितना ब्यूटीफुल दिखेगा। या इसका डिमांड है कि हम लोग अपने ऑफिस में ऐसे प्लांट देखना चाहते हैं जिसके अंदर फ्रूटिंग हो, ऑरेंज में ऐसा फ्रूटी, मैंगो में फ्रूटी छोटा सा होना चाहिए, पॉटेड प्लांट होना चाहिए, उसके अंदर फ्रूट हमें दिखना चाहिए। तो डिपेंड अपॉन द ह्यूमन रिक्वायरमेंट ये जो कलाकार है जिसको हम हॉर्टिकल्चरिस्ट बोलते हैं, ओके, उन्होंने क्या किया है कि आजकल ये सब वैरायटी बनाना शुरू किया जिसमें एक ही प्लांट में वी कैन सी द डिफरेंट टाइप, डिफरेंट कलर ऑफ द फ्लावर, और इट इज पॉसिबल इन द केस ऑफ बनाना, ऑरेंज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट जिसमें हम एट द potted plant you can see the flower and fruit।
Now the next one, how they are doing the artificial method of vegetative propagation. कैसे होता है? We are going to see. The first one is known as the cutting. तो सबसे पहला जो artificial method of propagation होता है उसका पहला step है cutting. The small piece of any vegetative part of a plant have one or more bird is used for the propagation. तो इसमें क्या होता है? अगर हमें कटिंग करना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि जिस प्लांट में एक या एक से ज़्यादा बर्ड्स है, ओके, उसको कट करना और कट करने के बाद हम उसको प्रोपिगेट करते हैं. नाउ द स्टेम कटिंग में हमारे पास एग्जांपल है रोज. लीफ कटिंग में वी हैव वेरिया and root cutting में we have the blackberry. I will show the picture. Will show the pic जिससे you can easily identify कि how the people are doing, कैसे करते हो. So this is a stem cutting. You can clearly see कि पहला रोज के स्टेम को कट किया गया है, फिर इसको पॉट में डाला गया है. पॉट में डालने के पहले लीफ आए, लीफ आने के बाद में देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर. तो दिस आर द मेथड. ये नेचुरली होता नहीं है, ये सब आर्टिफिशियल मेथड किया जाता है. Now this is a leaf cutting. Okay, so leaf को different फ्रेगमेंट में उसको कट करके इस तरह से डिफरेंट पॉट में डाला गया है और हर एक इंडिविजुअल will definite will able to grow a new plant. Now this is a root cutting. Okay, तो ये सिंपल सा रूट यहाँ पे देखा हुआ है. रूट को प्रॉपरली कट करके जब इसको सॉइल या पॉट में ग्रो करते हैं तो दिस प्लांट बिकम अ एडल्ट प्लांट. एक प्रॉपर से मैच्योर हो जाता है, प्रॉपरली ग्रो. So these are the three methods which are used in the cutting. रोज में स्टेम कटिंग करते हैं, सैंडेरिया यूजिंग द लीफ कटिंग एंड ब्लैकबेरी में यूजिंग द रूट कटिंग मेथड. नाउ द नेक्स्ट वन इज नोन एज द ग्राफ्टिंग. ओके, तो ग्राफ्टिंग में क्या करना है? ग्राफ्टिंग में वी आर टेकिंग द टू डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज. टू डिफरेंट प्लांट है, उनकी वैरायटी अलग है बट उनकी स्पीसीज अलग है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रोज की बात करें तो रोज में अलग अलग वैरायटी के रोज आते हैं, बट एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे इंटरेस्ट है कि मुझे एक ही रोज के प्लांट में येलो एंड रेड फ्लावर दिखना चाहिए. तो कैसे करते हैं? तो वो एक देखने के लिए वी आर यूजिंग द ग्राफ्टिंग टेक्निक. आई विल शो यू हाउ दे आर डूइंग द ग्राफ्टिंग. हियर part of two plants are joined such a way they can grow as a one plant. In this method, the stem containing more than one bud scion and join onto the rooted stalk called grafting.